ओके सो अंटिल द लास्ट लेक्चर हमने हमारा प्रोजेक्ट का 2 पार्ट कंप्लीट कर दिया है। फर्स्ट पार्ट वाज जिसमें हमने कॉन्फ़िग फाइल की मदद से एक डायनेमिक इंजेक्शन प्रोसेस क्रिएट किया, जिसमें हम लोग रॉ फाइल्स को कॉपी करके पार्केट में सेव कर रहे हैं इन अ स्टेजिंग कंटेनर। एंड देन फिर हमने डेटाब्रिक्स एनवायरनमेंट सेटअप करके उसमें 2 नोटबुक्स क्रिएट किए थे फॉर प्रोसेसिंग द बेसिकली द पार्केट फाइल्स इनटू डेटाब्रिक्स कैटलॉग टेबल्स। तो ये हमने कर लिया है 2 टेबल्स के लिए। अभी हम बाकी के 4 टेबल्स को हम लोड करेंगे एंड आफ्टर डूइंग दैट वी विल क्रिएट अ प्रोसेस्ड आउटपुट, और उसको हम फिर अपने स्टोरेज अकाउंट में एक प्रोसेस कंटेनर के अंदर सेव करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So the next file that we are going to load now is our dim customer table. So I'm just going to duplicate this dim date. So यहाँ से इसको duplicate करेंगे, clone. Let's change the name to dim customer and clone. So this is our dim customer table, and within this we have the logic. So यहाँ पे इसको बस rename करना है. This will be for dim customer, and then this will be your customer. Okay, so our cluster is not running as of now. Let's quickly run this. Okay, the cluster is getting started. So by the time it gets started, let's prepare the notebooks. So this will be dim customer, ये वाला भी dim customer होगा, and this will be dim customer as well. हमारा बस यहाँ पे टेबल का स्ट्रक्चर चेंज होने वाला है. So I'm just gonna keep as empty for now. This will be dim customer. इसको भी रिप्लेस करेंगे. ये वाले कॉलम नेम्स यहाँ पे रिप्लेस हो जाएंगे. This will be changed. Okay, so this is done. Now let's quickly replicate this. For dim employee, इसको रिप्लेस करेंगे. Cluster is still starting, so let's clone this and do the other 2 tables. Next 2 tables is dim city and dim stock item.
So we have done this for dim city now. Okay, I think एक छोटा सा प्रॉब्लम हुआ है, dim city को हमने सेलेक्ट नहीं किया था. Let's see. Okay, we made the changes on a different notebook. Okay, ये कस्टमर है, ये dim employee है. And city वाले के अंदर में we have the code for dim employee. Okay, now we need to rename this. Let's rename this. And this will become dim city. Okay, now this is done. Now let's replicate this again for dim stock item. Clone. Stock item. And after clicking on clone, we will select this file this time so that we don't miss it. इसको paste करेंगे यहाँ पे. So we are basically replacing every dim city with dim stock item here. Table structure, we will do this in a minute. Okay, now it's done. Now we can just go to the files. सबसे पहला file था dim customer, so we will run that. So let's see the cluster if it is ready or not. Okay, the cluster is ready. Now let's run one notebook at one cell at a time. Okay, so now we need the structure. For that we just need to run this first, and then we will just do this here, print and generate create table command df, and the name of the table is dim customer. So now it's given the structure. Now let's copy this. And we will paste it here. So in here we need these things are fine, and then there's this column called credit limit. We want to make this as decimal, and 10,2. Rest of the things are fine. Now we can remove this. Now we will just try to get the column names here. So we'll do df.columns. I'm just gonna copy all of this, paste it here, replace all the single quotes with empty string. So Control D to multiple select, then backspace, and then we will copy this here into the select part. एंड यहाँ पे हमें इस क्रेडिट लिमिट कॉलम को हैंडल करना है, बिकॉज इसमें जो वैल्यूज़ हैं वो स्ट्रिंग में है एंड उसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हैं. सो लेट मी शो यू व्हाट आई मीन. सो इफ आई जस्ट पेस्ट इट हियर एंड देन रन इट, select command separately, you would see there are some values here. Yeah, so in this अगर तुम देखोगे क्रेडिट लिमिट में क्वेश्चन मार्क और ये हाइफन आ रहा है और ये इस तरह के स्पेशल कैरेक्टर्स हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है. सो वी विल हैंडल दिस इन द सेलेक्ट कमांड. सो हम क्या करेंगे, वी विल यूज़ द क्रेडिट लिमिट कॉलम हियर विथ सम स्ट्रिंग फंक्शंस. वी विल यूज़ रिप्लेस, and we are going to replace question mark with empty string, and whatever result we get we are going to apply replace again. तो उस पर फिर से replace लगा के इस बार hyphen replace करेंगे so that hyphen clean हो जाए, and then last में इस पूरे पे trim लगा देंगे.
So now if I run this, we should get credit limit in numeric form. Okay, now there is one more thing left. There is some commas here, so ये हमें replace करने हैं, तो एक और replace लगाना पड़ेगा. Replace in this string with comma replaced as empty string. Now if we run this, we should get the result. अब comma वगैरह replace हो गया. Now we can try to cast this as, so for that we will use try underscore cast function, this value as decimal, and it will be 10 comma 2, and we will assign this as credit limit. Okay, so now let's see the credit limit column. Yeah, we are getting this credit limit value here. Now there are few columns like valid from and valid to. ये जो दो कॉलम है हमें ज़रूरत नहीं है. तुम चाहो तो हम अपने टेबल के स्कीमा में इनको रिमूव कर सकते हैं, बट फॉर नाउ आई एम नॉट गोना डू दैट. इफ़ यू वांट यू कैन हैंडल दैट, बट फॉर नाउ वी just copy this part here and replace with our insert command. तो यहाँ पे credit limit की जगह we will paste that. So now we can just remove this part here, and then we will run this. Cannot be found. Okay, I think we need to run the create table command. Okay, so yeah, now it's working. Create table is done. We will run the insert now. Insert is done, and let's run this one. So now we have the data here. ठीक है, तो अभी हमारा डिम कस्टमर लोड हो गया है. इसी तरह से हमें डिम एम्प्लॉय, स्टॉक आइटम और सिटी को लोड करना है. सो लेट्स क्विकली डू दैट. कोड हमने लिखा हुआ है, हमें जो स्ट्रक्चर चाहिए. सो फॉर दैट आई विल रन दिस फर्स्ट एंड देन also need to run the util so that we can get the function. तो वो generate वाला function चाहिए हमें, उसको हमें print में pass करना होगा, and we will pass this generate create table command df, and table name is dim employee. Now we got the column names. Let's copy this, paste it here. These are fine. Is salesperson, this will be integer, so let's make it integer. That's fine, rest of the things are okay. Let's run this. And then run the df.columns. Copy all the column names. Paste it here. Replace all the single quotes. If somebody doesn't know how I'm selecting multiple cursors, here is by using the Control D key. Okay, so now we can just run this and then this one.
So first it will try to insert, and then after inserting it will show this. Okay, so div employee is done. Let's do the dim city. Run the utils first and the df so that we can get the data in df, and then uske baad we will run print command on generate create table command, and then यहाँ पे we will pass the df and table name as dim city. Okay, so now this is done. Now I can copy this and put it here. So column names are fine, we don't need any case data type change here, so this is fine, and then we can remove this. Let's run this part and then run the df.columns. इसके बाद हमें df.columns को रन करना है. इसको रन करके कॉलम नेम्स का लिस्ट आएगा, इसको यहाँ पे इस तरह से डिस्प्ले करेंगे, and then यहाँ पेस्ट करके we will replace all the single quotes. अब ये जो कॉलम नेम्स हैं ये यहाँ पे रखने हैं बस हमें. Then run this and this one. Okay, dim city वाला कमांड नहीं चलाया था create, so this will now create the table. After that we need to run this. Okay, so now dim city is also done. Let's wait for the result. Yeah, so now city table is completed. Last table is dim stock item. Let's quickly do that as well. So we will print generate create table command, and then df, and the name of the table is dim stock item. Now let's copy the column names. Put it here. So इसमें अभी हमें okay, so इस चिलर स्टॉक नाम का एक कॉलम है इसमें, दिस वन, जिसमें इस तरह से हाइफन आ रहा है. ठीक है, सो फॉर दैट वी विल हैव टू यूज़ स्पेशल कैरेक्टर लाइक दिस. सो नाउ दिस इज फाइन. हाँ, यहाँ पे लगाना पड़ेगा, ये हट जाएगा. सो नाउ इट्स वर्किंग. सो स्पेशल कैरेक्टर्स में हाइफन इज़ नॉट अलाउड डायरेक्टली, सो उसको स्पेशल कैरेक्टर्स के साथ एनक्लोज करके लिखना पड़ेगा. सो दिस इज़ द स्पेशल कैरेक्टर. यू नीड टू यूज़ द tilde symbol, and then that's done. Now let's run this. Let's see if the table creates. Okay, table is now created. Now let's scroll down. We can remove this print command now, and then run this, and then just do a df.columns. df.columns. Now we will get the column names, copy it from here like this, and then put it here. Here we will remove all these single quotes, and इस chiller stop column में we will just put a tail symbol around it because that's a special column. And then now we can copy all of this and paste it, and then run this.
let's see if we are getting the data. Okay, stock item table is now loaded. Now अभी हमारे पास सारे staging tables ready हैं. अब by using these tables we are going to create our mart table or the process table. So उसके लिए let's go to mart and let's create a simple monthly sales table, okay, जिसमें month wise हमें total sales वगैरह दिखाना है. So let's do that. So we are going to create a new notebook and then in this we will say monthly sales report or something, and यहाँ पे let's create a text heading. So I'm using markdown for that. So this will be, let's say, monthly sales. So अभी हमें क्या करना है कि जो monthly sales का output होगा पहले उसको prepare करते हैं using just select commands. So let's write select and since we are using Spark SQL तो हम magic queries use करेंगे. %SQL select and let's do a select star from fact sale first. fact sale. अब ये fact sale जो है वो हमारे staging database के अंदर है जो कि है cf adb youtube dot staging dot fact sale. So that's how the naming convention is. अभी मैं बहुत बार मैं staging के tables को access करने वाला हूँ तो मैं इस catalog का नाम बार बार नहीं लिखना चाहता. तो मैं क्या करूँगा कि I will write another command here which will be a use command. तो मैं यहाँ पे लिखूँगा use cf adb youtube dot staging. अब इससे क्या होगा कि मेरा करंट डेटाबेस सेट हो जाएगा इस डेटाबेस में. तो इसके बाद डायरेक्टली आई कैन जस्ट कॉल select star from fact sale. Now what we are going to do is we are going to join this table with our date table to calculate monthly revenue and monthly profit and all those things. So यहाँ पे fact sale को let's call it A and doing a left join on dim date and then इसके बाद इसको let's call it B. Condition will be on A dot and there is a column called invoice date key equal to B dot date column. That's how we are going to do the join. And after doing the join यहाँ पे हम लोग B table से month column निकालेंगे. A table से we will take out the total including tax, not including but total including tax. Okay, so total including tax इसका हम sum करने वाले और we will call this sum as revenue. Okay, और इस output को यहाँ पे रख देंगे. Let's format the code and then we will do the same thing for profit and other calculations. Okay, so we will a dot profit here and then this will be profit and then this would be your next column is okay, profit spelling is wrong. This will be profit and then this would be revenue and और इसमें हम लोग let's make use of the quantity column. Quantity को we will sum it and we will call it as quantity sold. Okay, so this will give us total quantity sold till now. So this is total quantity sold and I think that's pretty much it for now. Let's keep it very simple. Let's not complicate the process and then इसको run करते हैं. Okay, so it's not getting okay. Group by is missing. We need to add a group by on month. Group by b dot month. Now let's run this. So अब ये month wise aggregate करके revenue, profit and quantity sold हमें इस तरह से table format में दे देगा. Now with the month we also want our financial year or the fiscal year. So there is a column called fiscal year. So we will do b dot fiscal year comma and we need to add the group by also here like this and then we will get the result month year and like that. The fiscal year will be having underscore here. Okay, now it's done. So we have a result like this month, year, revenue, profit and quantity sold. अब ये जो आउटपुट है मैं अपने एक प्रोसेस्ड कंटेनर में सेव करूँगा एंड देन वहाँ से हम SQL डेटाबेस में ले जाएंगे. तो ये एक एग्जांपल था जिसमें हमने मंथली सेल्स का डेटा या टेबल क्रिएट किया. ऐसे और भी बहुत सारे प्रोसेस टेबल्स तुम बना सकते हो
You can make a table where you are showing like customer related information, employee related information. So the requirement can be up to you. I'm not going to stretch this far here. मैं इसको यहीं पे stop करूँगा for processing. So let's take this as an example now. तो अब ये जो आउटपुट है इसको मैं एक टेबल के फॉर्म में सेव करना चाहता हूँ. सो वी कैन जस्ट ऐड अ क्रिएट कमांड हेयर, क्रिएट टेबल, एंड टेबल नेम इज लेट्स से monthly sales as this particular select command. Okay, so it will create the table called monthly sales, and it will also insert all these records into that table. So now we know how many, whatever data we have here. So now if we add another line, and then just to verify we say select star from monthly sales, we will get this here like this. Now there is a small problem, since we हमने यहाँ पे क्रिएट टेबल लिखा है डायरेक्ट, और हमारा करंट डेटाबेस स्टेजिंग था, बट ये मंथली सेल्स हमें मार्ट डेटाबेस में रखना है, तो यहाँ पे स्पेसिफिकली पूरा नाम लिखना पड़ेगा. ठीक है, तो CF ADB YouTube.mart and then the monthly sales. Okay, so this is what we want, and right before this we will keep a drop command ताकि जब ये नोटबुक रन हो तो कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो उसमें. %SQL, we will do drop table if exist, and then the table name, and then we will run this. So this will do that, and then we just need to put here like this. So mart के अंदर हमारे पास monthly sales आ जाएगा. And finally this mart dot monthly sales, we are going to save it into a parquet file also. तो ये जो टेबल है, इस टेबल को हम एक parquet file में भी सेव करने वाले हैं. So how are we going to do that is we can do one thing. Let's change the approach. तो हम एक काम करते हैं, select command को उठा के एक डेटा फ्रेम बनाते हैं, and then we do that way. ठीक है, so df is equal to spark.sql, and then इसके अंदर हमारा कोड डाल देंगे. So I'm just gonna use multi-line string like this, and इसमें अपना कोड पेस्ट कर देंगे, and then we will run this. तो ये सारा आउटपुट हमारा df में आ जाएगा, and then we will write df dot write dot mode override save as table, and then we will name the table here. So the table name would be this one. This is our TF. Okay, this is our table name. Mode override save as table, and then we do this. Now we can remove this part. So ये क्या करेगा कि इस table को यहाँ पे replace करके create कर देगा, and then we can test it if it is working or not. First run this one, then run this one, and then run this one. Okay, so we are getting the data. अब हमें बस एक चीज़ करना है कि df टेबल में तो सेव कर रहे हैं, साथ ही साथ हम लोग अभी एक फ़ाइल में भी सेव करने वाले हैं. df dot write dot okay, so let's generate the code. I don't remember the syntax. Save my df into a parquet file in the following location. Location is mnt/processed/monthly sales. Okay, so let's AI do the job. Let's click on accept. So df.write.override parquet, and then we save it like this. So now if we run this, it will save the data into monthly sales. Okay, in fact let's make it monthly sales dot parquet. So now it's saved there. Now let's check our storage container. Let's go to home. I think I already have the storage container somewhere. Yeah, this one. So in this we are going to check our processed container. Let it load first, and on the left side we will click on data storage and then containers,
and then inside the containers we will go to the processed container, and then inside this processed we should have our data. Somehow it's not showing up. Why? Now let's test it. Okay, I did not mention the full path here, like this. Now it should work. Now let's cross check it. Okay, so now let's refresh. The command is completed. So now here we have the data. Monthly sales dot parquet. This is the result. See if the document is completing. That's done. See, so monthly sales dot parquet नाम से यहाँ पे फाइल हमने सेव किया हुआ है, और ये जो फोल्डर है, this is different. This is for your this is basically maintained by your catalog table where it is. Yeah, this particular thing हमने जब यहाँ पे सेव किया तो मंथली सेल्स नाम से एक टेबल बना, और उस टेबल के अंदर जाके ये सेव हुआ. ठीक है, सो दिस इज दैट पार्ट. सो व्हेन इट स्टार्टेड, व्हेन इट एंडेड, ऑल दोस थिंग्स, राइट. बट वी आर इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर फाइल बिकॉज इसमें एक ही फाइल में सारा डेटा रखा हुआ है. नाउ लेट्स wrap this video here, and in the next video we will move this data from the Parquet into the Azure SQL environment. So that's it for today, and let's meet you in the next video.